Hello friends, welcome to Exploring Goals. TGT Arts रो LTR recruitment रो TGT Arts रो question जहाँ तुम माने वर्तमान देखि पारुछ आज रो परीक्षा pedagogy and evaluation. First question थिला which of the following names is not associated with constructivist pedagogy? किए constructivist pedagogy सहित related नुह जीन पियाजे हुअन्तु जॉन डेवी हुअन्तु लेव वाइगोट्स्की हुअन्तु समस्ते connected इवान पाब्लो हबो right answer. Next, which of the following not true for teaching as a process? Not true for teaching as a process कहिछि ଟିକେ confuse କରୁछि random activity କହିला sharing experience imparting information changing behavior ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ sharing experiences ବି ହେଇ परिबो but random activity ଗୋଟେ ଆଉ imparting information ଗୋଟେ ରହିला so not true for teaching as a process. तो रैंडम एक्टिविटी जेहेतु कहि दूची एक्टिविटी टा कनेक्ट हेई परिबो ना नहीं एंड इंपार्टिंग इन्फॉर्मेशन गोटे रहिला इन्फॉर्मेशन शेयरिंग टा टीचिंग नुह ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिबा इंपार्टिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट टीचिंग बोली हम जाने रैंडम एक्टिविटी में भी कनेक्ट हेई पारे नॉट ट्रू फॉर टीचिंग एज ए प्रोसेस तो रैंडम एक्टिविटी को मध्य टीचिंग सहित हुए तो कनेक्ट करा जाई परिबो सी हेई पारे राइट आंसर. द ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय रोजर्स मेनली एम्फासाइजेस तो ये सी सब बेले एक्सपीरियंस को इंपोर्टेंस दौले तेणु लर्निंग बाय डूइंग मोर अप्रोप्रिएट हम. फॉर्मेटिव इवालुएशन फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू लर्नर्स तो आम क्वेश्चन असेसमेंट फॉर लर्निंग हम राइट आंसर फीडबैक दिए 3F जो कही फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड फीडबैक. According to constructivist pedagogy, the role of teacher in the teaching learning process is to the simple question facilitate learning hobo. Next the assessment process used for placing learners in different groups according to their learning capacity. Learning capacity अनुसार group रे देउचे तो placement hobo, placement assessment. Which of the following is a salient feature of reflective level of teaching? Reflective level of teaching रो जो देखिबा thought processes are involved निश्चित involved anticipation of consequences passive role of learners consequences को anticipate करिबा केवल एवं एठी रहिला teacher exposition is the key element तो most appropriate is A. हमें कहबा thought processes ता हमरो involve होउची thought processes are involved is the right answer जोटा कि reflective level of teaching रहिबो. तापरे नंबर 8 को जिबा assessment of learners work accomplished by him over a long period is known as निजे निजे accomplish करछ assess करछ assessment of a learner's work तो एटी निश्चित रूपे portfolio assessment ही हबो. very good yes जो माने करिछो निश्चित रूपे भलो करिछो. the basic idea underlying the constructivist pedagogy निश्चित रूपे कोन हबो learning is continuous child can develop his own knowledge the only place of learning ना ठीक अछि child can develop his own knowledge ये होछि राइट आंसर. the main purpose of formative assessment अरे कोन खाली मजा तो कथा हो कोन हां आम क्वेश्चन गुडा चोरी हिच तो मु देखिली जोटा फॉर्मेटिव असेसमेंट और कंस्ट्रक्टिविज्म माको तो छाड़ी नाहंती. Okay, देखियो जा math pedagogy गोटे after a mathematics class on basic arithmetic skills which of the following learning outcome is expected of a student. अच्छा basic arithmetic skill टा कोन हला which of the following learning outcome अच्छा mathematics class रे ताने basic arithmetic skill टा सिखा हिची तेणु हम एक्सपेक्ट करि परिबा readiness to learn further mathematics ability to perform complex computation perform simple arithmetic yes एटा ही पारे ability to understand scientific नहीं देखो एठी कहिला जे बेसिक अरिथमेटिक स्किल पढायला तापर हम लर्निंग आउटकम हिसाब रे कोन एक्सपेक्ट करिबा सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन गुडा कसिए परफॉर्म करि परिबो जेहेतु हम सिंपल ही बेसिक जिंस ही पढै छै. which of the following is not a characteristic of constructivist approach of teaching learning अरे सब कंस्ट्रक्टिविज्म हां चलो बहुत कंस्ट्रक्ट करिछ आज नॉलेज तो राइट आंसर एठी कोन हबो not a characteristic of constructivist approach कहि छै इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट भलो लर्निंग सेंटर भलो एक्टिविटीज ओरिएंटेड भलो किंतु साइलेंट रीडिंग एंड राइटिंग एटा कंस्ट्रक्टिविस्ट नुहे जेहेतु नॉट कहि आंसर यस बी हबो. तापर रहला अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग कोन कंस्ट्रक्टिविज्म पूरा कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मे बी डिफाइंड एज कोन एठी कोन हबो पुनी
acquiring knowledge and skill तो भलो जिनस theory according to the constructivist theory of learning এটা তো ভালো জিনিস চেঞ্জ ইন দ্য বিহেভিয়ার অফ লার্নার ইয়ে বি ভালো জিনিস রেকগনিশন অফ কগনিটিভ স্ট্রকচার্স প্রিপেয়ারনেস ফর ফ্यूचर प्रोफेशनल लाइफ अरे सब तो कौन भल अच्छे अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मे बी डिफाइंड एज तो बेसिकली जदि आम कहवा एठी जितेबाला भी आम करुचे टाइप रो क्वेश्चन थ्योरी ऑफ लर्निंग रे कंस्ट्रक्टिविज्म रे एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स हबो किंतु चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आई थिंक ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पूरा परिवर्तन आनिबो तार व्यवहार रे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी रिऑर्गेनाइज हेई परिबो एंड प्रोफेशनल लाइफ बट देखिबा बी लागुची मोर अप्रोप्रिएट हबो भलिया तमे टिके कमेंट करिके जणैबो जदि किछि अलगा चेंज हबो द बेस्ट स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय टीचर फॉर मोटिवेटिंग द लर्नर्स इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास कोन सिलेबस रो पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म टा ही उठाई छि द बेस्ट स्ट्रेटजी टू अडॉप्ट मोटिवेटिंग द लर्नर्स इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास अच्छा को वे रे मोटिवेट करिबा हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास रे मोटिवेशन केमिति दवा एनकरेजिंग कंपटीशन फॉर हाई स्कोर हबनी यूजिंग रीइंफोर्समेंट ऑन रेस्पॉन्स यस बढ़िया सेटिंग लर्निंग टारगेट्स अकॉर्डिंग टू लर्नर्स इंटरेस्ट बढ़िया सेटिंग लर्निंग गाइडलाइन होल ग्रुप तो एठी तमे एटिके मुंड खेलैबार अछि एठी टिके एक्चुअली यूजिंग रीइंफोर्समेंट ऑफ ऑन रेस्पॉन्स टा हला कोन माने एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टा किंतु जदि ता इंटरेस्ट अनुसार ताकू लर्निंग गोल आम देई दबा खाली तार इंट्रिंसिक मोटिवेशन आसीबो तेणु इंट्रिंसिक मोटिवेशन आसिले कोन हबो से ऑटोमेटिकली काम करिवो तो कंस्ट्रक्टिविज्म रे कोन करे इंक्वायरी करे ना छुआ इंक्वायरी केते बेले करिवो जेतेबेले भितरु मोटिवेटेड थिबो ता इंटरेस्ट अनुसार लर्निंग टारगेट हम करि परिबा काई के हबोनी तो सी मोर अप्रोप्रिएट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is true for relationship between reliability and validity of a test आसिला ये तो कौन reliable जदि reliable हैला ताहले जाकी valid हबो एमती अछि कि can be reliable but not valid मन रखो reliable हेई पारे but not valid संभव ना नहीं संभव किंतु वैलिड हबनी रिलायबल नहले रिलायबल बट नॉट वैलिड कहिछि रिलायबल हेई परिबो वैलिड न हेई कि माने वैलिड बट नॉट रिलायबल वैलिड बट नॉट रिलायबल किंतु रिलायबल नहले रिलायबल हेले जाय कि वैलिड हबो रिलायबल हेले जाय कि वैलिड हबो यार माने हला यार आंसर बी हेई पारे ए वैलिड टेस्ट इज समहाट रिलायबल वैलिड टेस्ट माने वैलिड हेइची माने सेटा निश्चित रिलायबल हबो किंतु रिलायबल टेस्ट इज वैलिड आल्सो रिलायबल टेस्ट इज वैलिड आल्सो कैन नॉट बी वैलिड अनलेस रिलायबल रिलायबल नहले वैलिड हबोनी ए रिलायबल टेस्ट इज वैलिड आल्सो जेतु रिलायबल हेइची वैलिड भी हबो तो एटा भी हेई पारे एटा ए रिलायबल टेस्ट इज वैलिड आल्सो ओके तो ए सहित हमें जीव which of the following is not true for formative assessment yes focus on the process continue throughout the course less structured and more informal हेई पारे ends with award and एटा कोन समेटिव हबो एटा कोन हबो समेटिव हबो तो for teaching correct pronunciation words a language teacher should prefer to कोन हबो ऑडियो डिवाइसेस टा हबो काई के प्रोनाउंसिएशन को जाउस तो बाकी किछि हबोनी यस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड्स फॉर डेमोक्रेटिक लर्निंग एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिकली लर्नर्स लिसन टीचर राइट्स ऑन द बैकवर्ड लर्नर्स कॉपी टीचर प्लान्स एग्जीक्यूट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी सब टीचर कले हबोनी लर्नर्स आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस अमंग देमसेल्व्स एटा हला डेमोक्रेटिक आउ कंस्ट्रक्टिविज्म पूरा नहीं जाइछ आ असेसमेंट जस्ट टिके किछि क्वेश्चन सेतिके सरी जाइछि पूरा प्रोसेस ऑफ असेसमेंट कंडक्टेड बाय द टीचर फॉर असेसिंग लर्नर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस डायग्नोस्टिक हबो और रहला लास्ट क्वेश्चन कोठु आछि
ଏ କୋର୍ସ ବାହାରୁ ଆସିଛି କ'ଣ ଏଇଟା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଅବଜର୍ଭେବୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ। ତେଣୁ ଗ୍ରୋଥ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରୁ ବି ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍। ଆଉ କହିବନି ଯେ ସବଜେକ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି କେମିତି ଆସିଲା, ମ୍ୟାଥ ଆଉ ଇଂଲିଶରୁ ବି ଆସିଛି, ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନରୁ ବି ଆସିଛି, ଆମର କ'ଣ ହଁ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯଦିଓ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ ତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ତମମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ ଆଣ୍ଡ ଚେକ୍ କରିନିଅ 20ରୁ ସ୍କୋର କେତେ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ବାକି ପାର୍ଟ ୱି ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍। ସୋ ଷ୍ଟେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଗୋଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆମେ କଟଅଫ୍ ବି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ସେୟାର ୱିଥ୍ ୟୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ନୂଆ ଅଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।